వస్తున్నారు నా వాయిస్ Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good evening. Good evening, all. Good evening. Pranali ma'am, good evening. Pranjali, yeah? Yes. Pranjali ma'am, good evening. Good evening. Good evening. Sir, we will start now. Yes, yes. Or wait for one more minute. Start. Okay. Welcome all. Swami Vivekananda Yoga Kendra. Today we are going to start with Mukha Dhroti. That is Mukha Shuddhi Kriya we are going to see. Cleansing of our mouth. How we are supposed to cleanse. हम अपना मुंह कैसे धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं योगिक तरह से. तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू ऑल नो, हम ब्रश तो रेगुलरली करते हैं, पर अपनी जीवा दैट इज द टंग, उसको साफ करते हैं क्या हर दिन? अच्छा, अगर करते भी है तो वो टंग क्लीनर से करते हैं. मेटल आयरन की होती है ना, उससे नहीं करना है. अगर करना है तो प्लास्टिक का आता है, उससे कर सकते हैं टंग क्लीनिंग, बिकॉज इट वोंट हार्म यू. और दूसरा ना कॉपर का आता है, उससे भी आप टंग क्लीन कर सकते हैं, पर नॉट विद द आयरन वन, बिकॉज देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट, लग सकता है वो आयरन एंड देन इट विल हार्म यू. बट ये सब छोड़ के देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ क्लीनिंग द एंटायर माउथ विदाउट एनी ऑफ दिस थिंग्स. ओके, नाउ इफ अपना मुंह अगर खराब है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं. यानी बिकॉज अपना मुंह खराब होने से वी कैन ऑल्सो गेट डिसीजेस लाइक अर्थराइटिस, देन ब्लड प्रेशर, जो है वो भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक माउथ. सो माउथ शुड बी ऑलवेज क्लीन एंड प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ. सिंपल थिंग, अगर अपने दांत खराब है, we are not able to chew properly, अगर हम अच्छे से चबा नहीं सकते और निगल नहीं सकते अच्छे से, तो देन नेचुरली डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा. So for that the teeth should be very nicely treated. अगर आपको गम्स में, टीथ में प्रॉब्लम है, कैविटीज है, तो इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर, गेट इट क्योर्ड. यानी ज्यादा रूट कैनल करने तक नहीं जाना चाहिए. जो स्टार्टिंग की पोजीशन है वहां पे ही यू शुड गेट इट ट्रीटेड. एंड नाउ हाउ यू आर सपोज्ड टू कीप इट हेल्दी एंड प्रॉपर. आई विल टेल यू one each method, how to clean your teeth, how to clean your tongue. फिर अपना तालू भाग. Excuse me, ma'am. Please, can you ask all to keep it muted, because there's a lot of disturbance. Everybody has kept it muted, I think so. There is a disturbance. Yes. Yeah, now it's not there. Now it's not. 1 minute. Now the disturbance is gone. Okay. Fair enough. अभी सब अच्छे से सुन सक रहे हैं ना? हाँ. So where was I for the cleaning thing? So how to clean the mouth?
Now let us first start with दंत धौती. अभी दंत धौती के लिए क्या requirements है? First is tooth powder. It can be any good tooth powder. नमक के साथ भी आप धो सकते हो अपने दांत. Then the third thing is oil. तिल का ऑयल है ना, उससे भी दांत धोते हैं. Nicely oil लगा के you wash your teeth with oil. But best is tooth powder. अब कौन सी भी मिलती है, any neat tooth powder you can buy और उसके साथ कर सकते हैं. तो let us first see. I am sharing the screen how to do दंत धौती. You can see the screen, all of you all. See, now you are supposed to take the powder in your hand. Slide, Then go over. Yes, sir. slide. Open the slide, no? It is open, sir. It is not seen. The whole screen is not coming, no? I'll just 1 minute, sir. I'll redo it again. Now, sir, the slide is seen. You have to go to slide shows, no? Slide show. Yeah, I'm actually doing it. 1 minute. Let me check. Your screen, your computer screen has been seen. Yeah. The whole screen. Now the Danta Dhauti ka screen is seen, right? No. Now, sir? No. No? Okay. हाथ से दिखाइए नहीं तो. हाथ से दिखाती हूँ फिर, but right now let me just. Now, sir, it is seen. No. Ma'am, all files are in a single slide. But 1 minute. I'll just check. Last time I'll just check, nahi to otherwise I'll just explain you with my own self. 1 minute. Ma'am, first open the slide and then share your screen, then it will be visible. Okay. Thank you, Pooja ji. Thank you. Okay, now I'll share. Now you can see. अभी दिख रहा है screen? Yes. Now you can see the Danta Dhauti I'm showing you. Yeah, sir, screen. Yes, madam. Yes, madam. So now this is the way. अभी आप देख लीजिए. हाँ, दंत धौती में आपको पहले first thing is you have to take the powder in your hand, then start brushing straight. Okay. साइड के तरफ जाना है, then slowly down, then over, up, then inside. ऐसे properly हाथ से अंदर तक जाता है. ब्रश से उतना हाथ अंदर नहीं जाता है जितना अपने उंगली से जाता है. So this is the way with you're going to do it with your finger. The index finger you're going to brush the यानी आप अप्लाई करेंगे and nicely wash it. Okay, this is called as Danta Dhauti. Now the next will be Danta Mula. Now you can see the screen again, Danta Mula. Yes. Okay. Now in Danta Mula, what you're going to do is you're going to do milking action. Like see,
what I am doing, I am milking it. The gums, I am taking it down. After certain age, after age of 40, the gum starts residing back. They come, तो दांत ऐसे ना बाहर दिखने लगते हैं, and the gums start residing behind, ऊपर जाते हैं. ऊपर जाने से तो ये you have to do milking action. ऊपर से नीचे, और नीचे के दांत है वो ऊपर स्लाइड करना है. So slowly you're going to do the milking action like this. Okay, this is for danta moola, the mool of the danta. That is the gums. You are going to do it this way. The next one is Jivadauti. Now, how you are supposed to do Jivadauti? This is Jivamuli. 1 minute. Jivadauti. Just see this Jivadauti. Now, while doing Jivadauti, you're going to do the milking action. Milking of the tongue. यहाँ जब tongue हम milking करते हैं this way, nicely. So it activates all our taste buds. जो tongue के ऊपर taste buds होते हैं वो सब activate होते हैं. Then what you are going to do is you are going to pull it nicely out and leave it in. ये करने के बाद you are going to pull the tongue out and leave it. So the elasticity of the tongue is maintained. आपका शब्द जो बोलने का है, that is nicely said. You can speak nicely. So this is the way you are going to do the milking of the tongue. This is called as Jivadauti. The next is Jivamula. That is cleaning of the root of the tongue. So you have to go take the hand deep down with these 3 fingers. You have to put it inside and clean the root of the tongue. So here you should be empty stomach, or otherwise you will feel like vomiting. Okay, so this is Jivamula Dauti. That is the inside of the tongue. You are going to do it, wash it nicely. The next is Kapala Randra Dauti. That is the soft palate which is on the top. That you are going to clean nicely. Uppar ka Kapala Randra Dauti. Nicely you are going to clean it, up and down motion, और clean करना होता है. So this is called as I am stopping the sharing of the screen now. So हमने 5 things सीखे. पहले क्या है? दंतमूल, that is brushing with the toothpick. अभी इससे benefits क्या होते हैं? दंतमूल से gums अच्छे होते हैं, दांत एकदम अच्छे हो जाते हैं. So अपना food जब हम chew करते हैं तो वो अच्छे से chew कर पाते हैं. So digestive system इसमें अच्छा रहता है. The thing is, जो हम food खाते हैं, अगर दांत दुख रहा है and if you eat sweet food or anything लगता है तो it is painful. So when we do the cleaning properly, we don't get cavities. We improve our dental quality. So this is the process. Now about the Jiva, about the Dantamula. Dantamula is the root of the Danta. That is the gums. अभी जो gums है वो milking action करने, ऊपर से नीचे ऐसे milk करने. तो वो जो gums है हम नीचे ला रहे हैं, मसाज दे रहे हैं तो वो टाइटन हो जाते हैं. मसाज देने से वो टाइटन हो जाते हैं. अभी किसको करना नहीं चाहिए ना, जिसको पायरिया है. Some people have pyorrhea problem. उनके gums bleed होते हैं, फिर उनको ना ऐसे पस होता है, तो उनको नहीं करना चाहिए.
ये लोगों को वो जीवा दंत मूल नहीं करना चाहिए। अभी इससे ब्लड सर्कुलेशन दांत में अच्छा हो जाता है। सो द स्ट्रेंथ, द क्वालिटी ऑफ द टीथ, दैट इज द चूइंग क्वालिटी इंक्रीजेस। सो ये दंत मूल, यू हैव गोइंग टू मिल्क इट नाइसली, स्लोली, एक दांत करते, स्लोली स्लोली यू हैव टू गो टिल द बैक एंड ऐसे ही नीचे से ऊपर लाना है, और जब ऊपर का है वो स्लोली यू हैव टू टेक इट डाउन। ये दंत मूल हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट जीवा दौती, दैट इज द टंग। अभी अपना जो जीवा है, द टंग है, उसका जो दौती होता है, तो दैट इज मिल्किंग एक्शन। ऊपर से नीचे तक अच्छे से ले जाना है। अभी द टंग इज द मेन वाइटल ऑर्गन टेस्ट के लिए, हमारे टेस्ट के लिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। अगर अपने को कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और यू आर नॉट फीलिंग वेल, इमीडिएटली द टेस्ट ऑफ द टंग गोस। व्हेन द टंग टेस्ट इज रिस्टोर्ड, देन ओनली यू नो यू आर हेल्दी। अदरवाइज आपको इमीडिएटली समझ में आता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल। इवन इफ आपको सर्दी होती है ना, तो आपको टेस्ट नहीं आती है मुंह पे, कड़वाहट आती है इमीडिएटली। तो अगर ये हो जाए तो यू नो दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल। सो फर्स्ट थिंग, कभी भी कोई बीमार है तो डॉक्टर्स भी पहले क्या चेक करते हैं? टंग चेक करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना एक व्हाइट कलर की परत आती है, एक ऐसे व्हाइट कलर आ जाता है which shows that the tongue is unhygiene. अपनी टंग है ना, पिंकिश कलर की होनी चाहिए। It should be so cleaned properly every day. मिल्किंग करके, अब हम अगर टंग को पकड़ के ऐसा लाइटली खींचे और छोड़ दे तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। स्पेशली टीचर्स, दोज हु आर सिंगर्स, सिंग करते हैं, उनको ये करना चाहिए, बिकॉज उससे वो इलास्टिसिटी अच्छी होती है। फिर this action activates and makes the tongue little thinner. जाड़ी हो जाती है। जो 5 सुपारी खाते हैं ना, उनकी टंग जाड़ी होती है। अभी दंत, whenever you talk, द बोलते हैं तो वो जीवा अपनी ना दंत पे लगती है, तो those are the दंत words. So इसके लिए अपने अच्छे दांत होंगे तो we can say न, द, then other words are, I'll just tell you, 1 minute. थ, these are the words which are required. आप देख के बोल के देख सकते हैं अपने आप के लिए। त, थ, न. So न is a pronoun. If you don't have a teeth, it will be न, because the tongue will come out. It has to stick to the danta. These are the danta words which are required. The same way, certain words are for the tadu also. Ta, ta bolte हैं. So if our upper rung, that is called as kapal randha dhoti, the soft palate which is up, that is also important. So now first what we did, jiva dhoti कर लिया, फिर the jiva mula कर दिया, that is the 3 fingers you are going to insert inside and then just clean it nicely. उससे क्या हो जाता है, you are swallowing. When you taste buds are the 4 sides. See, first is tip of the tongue जो होता है ना, वहां पे salty and sour taste होता है, salty and sweet taste होता है tip of the tongue के लिए. बाजू में salty sour यानी खट्टा जो पन होता है ना, वो बाजू में होता है, और पीछे ना कड़वापन होता है, टंग के पीछे पे कड़वापन होता है. So these are the places where it happens. Now if bad breath gets accumulated, we talk bad breath आती है, तो इसके लिए अंदर मूल जीवा मूल दंत करना चाहिए. So nicely you have to clean your tongue properly. So white covering, dead cells whatever are there on our tongue should be cleansed properly every day. Decomposed tissues भी अंदर जाके अटक जाते हैं, अपने मुंह में हम खाते हैं, some decomposed tissues are there on our
Jiva. So those also should be cleaned nicely. So now you know that Jiva is first sense, taste का sense होता है उसके ऊपर. So that is the one main thing, and it is the health indicator also. अपनी health अच्छी है या नहीं है ये अपनी जीवा बता सकती है. You know it very well. Now ये सब करने से it is beneficial for the teachers. Then जो बोलते हैं lawyers होते हैं जो जिनको बोलना है ज्यादा उनके लिए these practices are must. It improves your digestion also. So doing all these practices, it will benefit our health. Okay. Now let me tell you, अगर रंध्र धौती करते हैं तो you put your thumb inside and then clean it. The soft palate up. When you eat something, you directly gulp down. But the soft palate which is there, यानी पीछे वाला जो soft palate होता है, आगे का hard होता है. आप अगर आगे देखेंगे तो ये hard है, पर अगर अंदर पीछे जाएंगे तो वो soft है जरा. तो वो निगलने के टाइम ना नाक में फूड ना चला जाए इसके लिए वो सॉफ्ट होता है. तो वो अंदर जाता है, हम निगलते हैं तो वो लॉक कर देता है नाक के यहाँ. एंड देन वी कैन इजीली गल्प इट डाउन. वो अगर अच्छे से नहीं जाएगा ना तो बीच में ही अंदर चला जाता है फूड नाक में. तो वो ना जाने के लिए वो सॉफ्ट पैलेट होता है. तो वी हैव टू पुट अवर थंब नाइसली इनसाइड एंड क्लीन इट सो दैट स्टिकीनेस इज देयर. आप अगर कल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने सॉफ्ट पैलेट के ऊपर अपर साइड देयर इज अ वेरी स्टिकी म्यूकस टाइप थिंग. सो वी हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली. तो अपनी वाचा जो हम बोलते हैं दैट इज क्लीन एंड क्लियर एंड प्रॉपर. If that is not clean, our tongue slips, and then there are sometimes sound different आ जाते हैं. But if that is cleaned properly, फिर the vocal whatever we say is said nicely. So the teachers, I would just those who are the teachers or singers, एक तो जीवा धौती करनी चाहिए, that is cleansing of tongue and then pulling it out, making it little elastic and leave it. ये करना चाहिए मूलदंत and then जीवा मूल and kapal randra dhoti. That is kapal is the top of the thing and you have to clean it. Okay. So now we have done this. Now we will start with our sense. Now I have asked you to keep something ready with you to eat. Okay. So आपके पास कुछ तो है जो आप मुंह में डाल के टेस्ट करने वाले. Okay. So what you are going to do is right now, first relax your mind, concentrate on your breath. When I tell you to take that object, put it in your mouth and then eat it. Okay. तब तक first just close your eyes. You are not going to immediately eat it. Just sit down, close your eyes, concentrate on your breath. Okay. Breathe in, breathe out. Just relax yourself for 1 complete minute. I'm not going to talk now for 1 minute. Just relax and be with yourself. Breathe in and breathe out. Just concentrate on your own self for 1 complete minute. After 1 minute, I'll just let you know the time starts now.
Gently, just bring your mind to the consciousness again and slowly open your eyes. Now take that object, keep it on your tongue. Whatever is there, means the food, that is, if it is the lemon or any seasonal fruit or anything, just keep it on your tongue. Do not gulp it down, just keep it on the tongue and let the saliva come. You are not going to drink that saliva. Allow it to come, just keep it, and we will again keep quiet for 1 complete minute. 1 मिनट के लिए हम फिर से शांत बैठेंगे. हमको वो निगलना नहीं है, जस्ट अपने मुंह में घुमाना है, वो मुंह में रख के जस्ट विथ इट, वो सलाइवा में पूरा जाना चाहिए, उधर ही होना चाहिए. Again 1 minute, we are not going to say anything. The time starts now. Do not gulp it. मुंह में ही रखना है. 30 seconds हुए हैं. 1 more minute. You are going to keep it. Let the saliva get collected in your mouth. अपनी saliva अपने मुंह में रहने दीजिए, उसे निगलना नहीं है आपको. Okay, now slowly gulp it down. Slowly take it inside the saliva and whatever is there. Chew करके भी आप अंदर ले सकते हैं slowly. Now you know how the taste was completely. Okay, slowly up निगल. Take your time. Slowly, slowly पूरे मुंह का आपने टेस्ट ले लिया है. Now you know how the taste is perfectly. What you had taken, और पूरा टेस्ट आपको मालूम हो गया है. The same way, now keep on taking the saliva and थोड़ा थोड़ा करके वो मुंह से वो टेस्ट चला जाना चाहिए. एक बार slowly चला गया, then again just be there, relax for 1 minute. And then slowly concentrate on your breath. Just be there with your breath again. Keep on gulping the saliva. वो जो मुंह में टेस्ट है, अगर स्वीट टेस्ट है, सार टेस्ट है, whatever taste is there in your mouth, you are just going to take it in and just slowly saliva अंदर लेनी चाहिए पूरी की पूरी. Now normal taste होना चाहिए, no other taste. Just focus your mind on your breath again. If you are salivating, मुंह में saliva आ रही है तो आप निगल लो. Now slowly open your eyes. अभी क्या हुआ है? We know what we had tasted. Okay. Now, when I tell you to close your eyes, you are going to imagine the taste what you had tasted first, and see आपके मुंह में अगर फिर से वो पानी स्टार्ट होता है क्या आने के लिए. जो टेस्ट आपने अभी निगल ली है, अभी बिना खाए, बिना वो चीज खाए फिर से आपके मुंह में कितने जनों के स्वाद आता है. फिर से शांति से आई एम गोइंग टू गिव यू 2 more minutes अगेन. इमेजिन करने के लिए कि वो क्या स्वाद था हमने जो निगला है. अगेन यू आर गोइंग टू क्लोज योर आईज नाइसली
and then start thinking about that particular taste. And keep your eyes closed and just think about the taste. Which taste was it? Has it started again? You are started getting saliva. One minute has happened, one more minute to go. Just be there with your breath. And feel the taste is coming, whatever you had eaten, the same taste is coming or no. Now, gently open your eyes. और किसको किसको स्वाद आया और किसको नहीं आया? Everybody got the taste. So that means this is the way. अभी ये मैं बताती हूँ आपको. Now some people have a craving for food. अभी आपको ना ऐसा लगता है मुझे ना स्वीट खाना है, ओके? पर आपको स्वीट खाने के लिए अलाउड नहीं है, ओके? आपको बोला है किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो स्वीट खाने के लिए अलाउड नहीं है, या आपको तीखा खाने के लिए अलाउड नहीं है. अभी मुझे आज पानी पूरी खाना है और मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, बट दैट क्रेविंग इज देयर, मुझे खाना है. सो व्हाट यू वुड डू? सिंपल थिंग, आप शांति से बैठ जाओ. इमेजिन द पानी पूरी, imagine the pani puri and keep your eyes closed. Your mouth will start salivating. पूरा मुंह में पानी भर जाएगा. आप जब वो पानी निकल जाओगे, saliva, if you take it inside, वो पूरा पानी ले लोगे, you will be satisfied. Try this. इसके लिए ये मुस्लिम लोगों में बोलते हैं ना, रोजा के टाइम दे डोंट इवन टेक द, वो निकलते नहीं है सलावा इतनी, क्योंकि देन यू फील सेटिस्फाइड, यू आर फुल, ऐसा लगता है. तो अगर स्पेशली ड्यूरिंग द उपवास और एनीथिंग, इफ यू थिंक ऑफ द फूड एंड इफ यू जस्ट गल्प इट डाउन, यू आर सेटिस्फाइड इनसाइड. नाउ आई एम टेलिंग यू, सबके लिए आपकी फेवरेट डिश कौन सी है वो डिसाइड करो. इट कैन बी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एनीथिंग. इट कैन बी अ रसगुल्ला ऑल्सो, और इट कैन बी अ तीखा पानी पूरी, भेलपुरी, एनीथिंग. जो कुछ भी आपको पसंद है. अ भजी ऑल्सो कैन बी देयर. थिंक ऑफ दैट आइटम, थिंक ऑफ दैट आइटम, क्लोज योर आईज नाइसली. हाँ, मुंह में सलाइवा निकलनी नहीं है, पानी आ जाता है. अगर गरम गरम भजी का स्मेल आ गया, आप जस्ट इमेजिन करना चालू करो. या पानी पूरी, खट्टी मिट्टी पानी पूरी होती है, या सिंपल जीरा गोली होती है, वो भी बचपन में हम सबको अच्छी लगती थी. वो चूरन मिलता था, वो अच्छा लगता था. या इमली, इसी यू विल स्टार्ट गेटिंग द टेस्ट इन द माउथ. You are not going to gulp it down. Just feel that taste. Close your eyes now and feel that taste. Start just feeling the taste inside.
I'm going to keep quiet for complete 3 minutes now. You're just going to collect the saliva in your mouth. जो चीज आपको पसंद है उसका think करना और let the saliva come in your mouth. Don't gulp it. निगलना नहीं है, वो मुंह में ही रखिए. But think of the food. Lovely, nice, delicious food. It can be anything. घी की खिचड़ी भी हो सकती है, lovely. A nice achar, tikha, anything. Just think of something. I'll keep the mic closed for complete 3 minutes now. Start thinking. One and a half minute already complete. 1.5 minute to go. But don't gulp it down. अपने मुंह में पूरा भर के रखो. Now again, slowly open your eye and slowly gulp down the saliva. Slowly gulp down the saliva and open your eye. अभी आपको सबको वो टेस्ट आई थी? And feel that. Wait for some times, you will feel as if you have eaten that thing. आपको समझ में आएगा कि हमने वो खा लिया है. I could smell also. Exactly. This is what happens. So now sometimes when you are dieting and you're not supposed to eat that thing, पर वो तो खानी चाहिए ऐसा लगता है. So that is the time you're going to sit nicely on one place. Think of that thing. It can be pizza, pasta, anything, whatever you want. Cheese चाहिए तो cheese का imagine करो. Slowly gulp it down and satisfy yourself. Meantime, see,
वो खाना है, मैं नहीं बोलती हूँ कि अभी बिल्कुल ही खाना नहीं है, बट कभी कभी some things are restricted, so you cannot have it many times. So sometimes you can go this way. This is the way धारणा करनी है अपने यहाँ, and you can feel the taste completely. Now I'll ask you, anybody wants to ask certain questions, you can ask me. Then we will, I'll ask sir. Sir, can we just continue with the questions? Yes, और yes. आप meditation लेंगे sir बाद में? You can start 5 with minutes. questions. Yeah, questions for 5 minutes. Then we go. 5 minutes we will start the question. So only 5 minutes are left. Questions, you can take questions or we can go for the meditation. Only thing is, when you are telling about this brushing, whether you have got any preference for tooth powder or toothpaste? No reference of the tooth powder. No reference. No, It will be namak also. See, Okay. namak के साथ भी दो सकते हो. I told you namak, normal namak, that is अपना table salt. जाड़ा नमक नहीं बोल रही हूँ, normal. The second one is अपना तिल का तेल. That is natural things I'm telling. Toothpaste can be anything. Tooth powder can be any powder. ऐसा particularly कौन सा मैं नहीं बोल रही. Okay. It can be any. Madam, when you are putting those 3 fingers inside, what is that called? So that time, have we to take the tooth powder or only simple? नहीं, पीछे जाके साफ धोना है, तो वो ना sticky लगता है पीछे जीवा के. So that you have to do it in the morning. नहीं तो putting the 3 fingers inside your mouth, root तक, तो ऐसी उल्टी की जैसे आता है. Just clean your mouth nicely. Without any paste, without any powder. हाँ, without anything. Normal clean करना है पानी से, with water. Okay. Then अच्छा, हम अभी खुला करते हैं ना वो पानी लेके मुंह में, तो वो कैसे करना होता है? You should keep on swirling it till it becomes warm. तो ही clean हो जाता है. पानी अंदर का warm होना चाहिए और फिर थूक देना है, तो वो सब जगह से clean होता है. हम क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं, जस्ट करते हैं, फिर थूक देते हैं. तो it has not gone all the places. तो अच्छे से करने के लिए पूरा मुंह में करके फिर ही थूकना है. So it should be lukewarm when it comes out. Madam, I want to ask you one thing. They say oil swishing. With till oil, you should swish inside the mouth. How do you advise that? That is best. वो तो सुबह करना है. Without brushing teeth, आप मुंह में 2 चम्मच तिल ऑयल लेना है या कोकोनट ऑयल, any oil. And then करते रहना है till the वो ऑयल जो thickness होता है ना, वो पानी में हो जाता है. Then you are going to spit out everything. You are not going to take anything inside. थोड़ा भी अंदर नहीं मुंह में निकलना है, because that is most toxic. Okay. तो पूरा थूकना है, but that you spit it on a tissue paper or a paper, because अगर आपने बेसिन में थूक दिया तो वो क्लॉट हो जाएगा बेसिन. And after that, you should brush your teeth. तो टिश्यू के ऊपर थूक के फिर you throw it in the dustbin. And after that, you need to brush your teeth after that. Then take warm water, mix salt in it, और उससे gargling करना, तो fresh हो जाता है. You don't need to brush after that. Then With you toothbrush and toothpaste. brush कर सकते हैं, but that will itself clean your mouth so nicely. मुंह में salt water, warm water, salt water लेके gargle करना है, swirl करना है और थूक देना है. Is it advised every day? You need to do it every day or rarely? You have to do it every day. Okay. Then it is healthy. I do it every day. क्या करना है? I'll tell you something. How much oil to be used? Morning, पहले वो मुंह में 2 चम्मच ले लेती हूँ, and then I start doing all the activities. यानी चाय के लिए बर्तन रख देती हूँ. I'm doing it in the mouth, but doing certain things. और फिर होने के बाद पानी गर्म होता है, that I take for salt में, I remove it. So उसने आधा घंटा हो जाता है. By the time you brush your teeth, do the cleaning, and then have whatever you want. Then I have a glass of warm water with lemon.
I don't have tea. I prepare it for my mama. But this is the thing. I Arvind ji, garam pani lete hain. Now, sir. Arvind ji has got some question. I think. Yes, Arvind. No, I cannot hear you, sir. You unmute yourself. You can hear me? Yes, yes, yes. Rasgulla or whatever it is. Sir, catch hold of the mic over here. Mic है ना नीचे? Mic है देखिए आपके यहाँ. आपके कान के नीचे माइक है. उसको Mic mic है को मुंह देखो. के पास Mic, रखिए. mic है sir. No, I cannot hear you. Sir, you can hear him? No. माइक मुंह के पास रखिए. माइक को मुंह के पास. आपकी माइक जो है मुंह के पास. I'm using a mobile mic. yes. Can you hear now? Yes, Yes, of yes. course, sir. Yes, yes, yes. आपने जो बोला I will say taste without taking the particular material, you can हाँ. have a taste of say example rasgulla, correct? Yes, Now- yes, yes. After 3 minutes, if you check with glucometer, does it show any increase in the sugar content? How can it, sir? How No can can. it? It won't do, sir. The ingredient has not gone in the stomach. How will it? नहीं होगा. नहीं. नहीं ना? नहीं होगा. That those who have blood pressure, diabetes, they should do that and check. कि अगर निकलने के बाद ग्लूकोमीटर से बढ़ता है तो I have no clue about it. Yes, sometimes I get this gum pain like this. Whether anything can be done. गन पेन आपको अगर है ना सर तो आई थिंक सो दिस इज बिकॉज जब सर्दी होगी तब गम पेन होता होगा. हाँ. तो देन व्हेन सर्दी जाएगी तो गम पेन जाएगा. Okay. हाँ, अगर गम ब्लीडिंग है तो देन यू हैव टू सी द डॉक्टर. Not gum bleeding. The overall all the gums like this. No, it is a. If you press, you feel, and when you are biting, you find little difficult. देन यू शो इट टू द डॉक्टर. और स्टार्टिंग में अभी ये करके देखना. Okay. पर पेन है तो देन डोंट डू इट. बट दंतमूल अगर आपने किया, दैट इज मिल्किंग ऑफ द गम्स, Yeah. तो थोड़ा आप देख लीजिए. आप चेक करके देखिए फिर ये करना. You can do oil pulling also. हाँ, Just take 1 spoon of oil, coconut oil or till oil. Heel oil, yeah. Just keep it in the mouth and throw it out. It is not regularly on and off. It comes. That is the thing. सर अभी ना हमने जो मेडिटेशन मीन्स मुंह में रख के किया था, दैट इज ओनली अ टाइप ऑफ मेडिटेशन. तो ऑलरेडी ना वी हैव कंप्लीटेड द टाइम. इट इज ऑलरेडी 48 सर. Yes, yes. Ma'am, Ma'am, आज can you just- meditation- सुनिए, आज मेडिटेशन अगर नहीं लिया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आंसर्स. What we will do next time will be for the eyes. And Trataka meditation, we will do it for a longer time. And Trataka meditation will be there till 7 o'clock. So I will take only 20 minutes next time. And sir will take a lovely Tratak meditation where all of you, all those who are coming, have to come with a lamp. Ghee ka lamp lena, that would be better. Candle nahi lena. Because that aroma of ghee will means अच्छे से होता है. So we will do this. And आज meditation, sir, short 5 minutes meditation हो सकता है. Okay, fine, we'll do. Yeah, no problem. Yes. Okay, so Yes. then over First to slide. Yeah. First 1 slide. minute. yeah, Can you just explain that oil pulling once again? yeah. Just take oil in your mouth, हाँ. coconut oil or till oil, and just keep on gargling it in your mouth for 3 to 5 minutes, ऐसे and then throw it out. मत रहना ऐसे. And then throw it out. That's it. Okay. हाँ, but What it about should clean know. the See, teeth throw with it out the oil? कब- I'll tell you. Throw it out कब करना है? जब वो thick substance पानी के जैसा हो जाता है. उतना Okay. टाइम it takes around say 10 to 15 minutes or more. पानी के जैसा हो जाता है, फिर ही थूक देना. Okay. Yeah. And Okay? then oil, cleaning the teeth with the oil is separate. नहीं तो फिर हाथ आप मुंह में डाल सकते हैं ना वही हाथ. Cleaning the oil with, see what I have said, either tooth paste, tooth powder or oil या Okay. नमक. That is cleaning of the teeth.
या आपने ऑयल पुलिंग कर लिया तो फिर हाथ ही अगर फिरा लिया तो भी इट इज गोइंग टू क्लीन। और मैंने बोला है पानी लेना है, lukewarm वाटर विथ सॉल्ट इन इट, मुंह में डाल के फिर से गागल करना है प्रॉपरली एंड थ्रो इट। Okay. Yeah. Thank you. इट विल क्लींस द एंटायर टंग एवरीथिंग। आप कल ट्राई करना, लेट मी नो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट फ्राइडे अर्ली 15 मिनट्स अर्ली वी विल ज्वाइन। इसका ये डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में आई का डिस्कशन। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इट विल बी त्राटक सर 5 मिनट्स मेडिटेशन। Over to you. The baseline is that first of all you should not brush your teeth in the morning. You should brush your teeth in the night before going to sleep. A good dentist will tell you this. Compulsory आपको रात को ब्रश करना है, सुबह नहीं करेगा चलेगा, सुबह you can do all this. Okay, first thing. Another thing is that most of us eat food without noticing, without being aware of it consciously. You're watching television or we are on the phone, so we are not respecting the food and for which we are working. इसके लिए भोजन मंत्र होता है। You know, in Bhagavad Gita there's a bhojan mantra where we chant the bhojan and then eat it. Gives so much of importance to it. So ये very important. So what you did, what is meditation is only to make you aware that you should be mindfulness. पूरे mind, पूरे दिमाग, पूरे उसकी जो भाव है उसको पूरा लगाते हुए हमको खाना खाना है। ओके, खाना खाना है with full of awareness, and you should have a very healthy relationship with the food, not only with your spouse or not only with your children or not only with your friends, but healthy relationship with the food also, which is very, very important. Then the other things, having relations with anybody else. Okay, so put this very clearly into your mind before going to this meditation. Okay, तो ये ध्यान रखना है। This is what we wanted to make you understand कि खाना, जो खाना, like there are 4 types of food. One is the bhojya, that is solid food which we chew. The second one is the piya, that is what we drink, fluids. Then is the koshya, that is what we suck, and the last one is the what we lick, leha, like honey. So you should know how to have these foods properly with mindfulness, with awareness. तो आप उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हो और वो आपको आपके शरीर में अच्छी तरह से लग जाएगी और आपको खाना भी कम खाना पड़ेगा। You eat less, you will not put on weight, believe me. This is one baseline of all these what Pranjali madam have explained to us so wonderfully. So this is one thing other than the meditation. Okay, so all of us sit in a relaxed posture. We will chant 3 Omkaras first. If you have the food item with you now, just keep it nearby you before chanting the Omkara. Okay, we'll chant the Omkara now. Take a deep inhalation. Now slowly and gently open your eyes. Now you take that food, what you have in your hand, your left or right. If you're right, keep it on the left. Eat from the right hand, keep it in the left hand. दाएं बाएं से खा रहे हो दाएं पे रखिए. Look at that food, that whatever substance you've got, maybe jaggery, maybe lime, whatever. Look at it properly. Look at its color. Look at its color, the texture. उसके रंग को देख लीजिए कैसा दिख रहा है properly. Texture. Feel the weight. कितना भारी है. Now with the other hand, take a bit of it and put it
place it on your tongue, inside your mouth, and don't do anything about it. Just be there. Now close your eyes. You know the color, you know the taste, you know the texture and the weight. It's in your mouth. Now the saliva is producing saliva there. Be aware of that saliva. The taste. And now it is slowly and gently dropping into your throat. गले के पास उतर रही है धीरे धीरे. Into your food pipe. Very slowly, gently. Bit by bit, the whole piece will not go in. Keep it going. The food is in your mouth. Gently going in. The juices, the saliva mixing together down to your throat. The taste, you're aware of it. Dripping down into your throat, going to the food pipe. If you're finished with it, you can take another piece, put it into your mouth. The same practice, keep going for another minute. It depends on what you're having. If you're having something solid, try to chew it properly. Chewing it in your mouth only with all your teeth. 32 times. Chewing and chewing. And the saliva mixing it. It is mixing with the saliva. Notice it. And the mixture of the saliva and the food dropping slowly into your throat to the food pipe.
Just stay there for a while. Now the food is not in your mouth. Bring your awareness on the tongue. When the food is not there in your mouth. Slowly, slowly open your eyes. I hope you enjoyed that bit of food what you had. Full of awareness, mindfulness. Yes, sir. We enjoyed, and thanks to Pranjali madam and you now getting bel puri or getting rasgulla is going to be difficult now. Yes. What happened is now, you know, IV, you give IV to the patient. Yeah. Drop by drip by drip. Why? Because the digestive system is weak or is suffering from, you know, some other ailment where the functions of the body, the digestive system or the circulatory system is not working properly. Then you give them by drip, no, the saline or whatever. So this is the thing, how you should have your food. In Ayurveda, they say only one anjali is enough for the whole day. If you have the food like this, properly going drip by drip inside. And especially when you fast, when you have this fast, so try to have the food like this. When you want to break a fast, fools can fast and a wise man can break a fast. So put this very clearly in your mind. So both लोग मेरे को बोलते हैं सर फास्टिंग हो गया उसके बाद मेरे को पेट खराब हो गया मेरे को उल्टी आई मुझे ये हो गया बस they were not aware of what they're eating. They were not knowing what is the food, what color is the food, what texture of the food, what your, you know, just खा रहे बस fasting छोड़ना है जल्दी से जल्दी निकलो and start eating whatever you get, isn't it? So this is the whole theory why we wanted you to realize this. This is how you should eat always. Even children, you make the children also do that. उसके ये मतलब the quantity कितना ले रहा है वो मतलब नहीं है. It is not the quantity, try to understand. It is how it is digested, and 70 to 80% of the food is digested in the mouth only. Only the churning happens down, and then the unwanted thing is going down to the large intestine and all that, you know. But the whole food is digested here. तो बच्चा कम खाएगा और उसमें मोटापन नहीं आएगा, और बच्चा कम ऐसा खाएगा तो बहुत बढ़िया है. So उसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बहुत खा रहा है, आज एक ही चपाती खाया या आधा ही चपाती खाया. No, that is not the problem. How he is eating, that is more important. How you are eating, that is more important. Chewing, slowly. I hope you enjoyed this session here. Thank you so much for your time. God bless you all. Thank you all. Yes. Now, if you Thank want you, to sir. join Thank you, spiritual Pranjali madam. class, Yeah. spiritual meditation class, that is regular, early morning होता है. Yes. 6:15 to 7. Join that. You will enjoy it more. Because not only these 5 meditations, there are hundreds of meditation, different meditations which sir teaches. So we'll enjoy. Try to do at 7:30 evening or maybe 6. Not only you know, the meditation helps you in lot many things. Not only about your health, lot many things. How to go. Sir, you told about this fasting. What should be the frequency of fasting? Once in a month or twice a month, like that? Depends. Twice a month, sir, twice a month हो सकता है. And that is Ekadashi fasting is best fasting. Okay. Good evening. अब महीने में 2 बार आती है एकादशी फास्टिंग करना. इसके लिए नहीं करना कि डर के भगवान है, अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम है. फॉर योर बेटरमेंट यू डू इट. नहीं किया तो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे करना. देन यू डू इट फॉर योर बेटर है. But no having. करेंगे और खाना नहीं है तब.
and no having potatoes and nothing. peanuts and sabudana. Very dangerous, very, very dangerous. Only maximum you can have is fruit. That's it. Yes. अगर नहीं खाया तो that is best. Fasting is with warm water. And we can do it. And what food shall we take after the fasting, please? Liquid. Start When you with break the Liquid. fasting, Start when you with break the liquid. fasting. लिक्विड डाइट यानी फ्रूट जूस लेना है या सूप लेना है, वेजिटेबल सूप विच इज लाइट, मंचाओ सूप या ऐसा नहीं सूप, नॉर्मल वेजिटेबल बॉईल करके ग्राइंड करके दैट सूप. After the fasting, how do you After break the the fasting, fast?